Okay, good morning all. Can you hear me properly? Yes, sir. Thank you. Okay, so can you see my screen? Yes, sir. Okay. So, in last section, what we have seen, we have started with the polymorphism concept from the OOPS, right? Yes or no, guys? Yes, Last sir. class में आप सभी थे? Okay. So we have started just the discussion about the polymorphism. Okay. एक बार मैं again repeat करता हूँ. We will see the concept and then we will see on the coding part as well. Okay. So in polymorphism, the simple meaning of polymorphism is the name is same but forms are different. Okay. मतलब देखिए नाम सेम होगा बट उसके फॉर्म्स डिफरेंट होंगे. ओके. फॉर एग्जांपल लाइक गेम होता है गेम. ओके. लाइक एनी गेम. So category will be the same as a game only. Okay. We will be naming it as a game, but its actual functionality may be different, right? उसके forms अलग अलग होते हैं. So same concept we will see here as well. Okay. So here in polymorphism we are going to see the two concepts. One is overload and second is override. Okay. So I told you for overload there are again multiple names. Okay. Overloading, method overloading. Again, what is this name in terms of polymorphism? Compile time polymorphism. Okay. During compilation of code we can perform this overload. That's why it is called as a compile time polymorphism also. Okay. So what is in overload or method overloading? See, the concept is the method name should be same. Okay. So here I will create two methods. Okay. Like method 1, the same name. Okay. But its signature will be different. So what is the signature exactly? Signature is nothing but method name m1 along with its parameter. Okay. along with its parameter or argument जो bracket में मैं specify कर रहा हूँ with data type and variable, it becomes as the argument for this method. Okay. और इसी को combinedly signature किसको बोलते हैं? Method का नाम और आपके जो argument है उनको combinedly मिला के हम कहते हैं signature. Okay. So here concept is what? Method name is same but signature is different. For example, this m1, this m1, both method are same, but their argument is different. We can see for first method it is accepting two argument or two integer a and b. In case of second example it is accepting three arguments: integer x, integer y, integer z. Okay. So this is what the method overloading. Okay. Now in method overriding both should be same. Both means the method name as well as its signature both must be same. Now here we can see the m2 is a method. M2 is a method which has same name and it is accepting the integer r or integer argument are also same. दोनों मेथड के लिए क्या है? आर्गुमेंट अभी सेम है. ओके. सो वी आर गोइंग टू सी इट ऑन दी कोडिंग पार्ट. ओके. So we'll create a package. Okay, simply we are creating a package, Java package, and in this package I'm going to create one class, one Java class. Okay. So first we will see the overload. कंसेप्ट किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट?
No, No, sir. right? Okay. So we have created one class, right? We have created one class. Now what I want to do is I want to create the methods. Okay, as per overloading I want two methods which is having same name but different, what we can say, argument or signature. Okay, so I will add one method, public void addition method. Okay, I'm going to make a addition method. Now I told you we have to give the signature. That means, okay, here I'm giving two signature, like uh, two variables, int a comma int b. Okay, so this method is going to accept the two's value. Okay, okay. Now here I want to give some statement or instruction for this method. Okay, that is simple. I'm giving as a plus b. Okay, this is my one method. Okay, this method is starting here and finishing in line number 7. Okay, again I want to create one more method with same name. Okay, so public void add, and here we have to give the different signature. So I will give three variables. Okay, int a comma int b comma int c. So it is accepting the three argument. It is accepting the three argument. So can I give the name as a plus b plus c? So here I'm giving the statement as a plus b plus c in this method. Okay, now after this, now we want execution. So for execution, what we need exactly? What we need? The data definition. Data definition. Okay, again Main method. we require main method, right? Here I have not defined any main method, and execution will start from the main method only in the Java. Okay, so we will define the main method. What is the syntax? Public static void main. Main. So this is your main method which we have defined. Okay, now I want to use this method. So what I need to do? Call the method. Okay, how can I call the method? Can I add like this? Is it going to call? Create. So we need to create an object. Okay, we need to create an object. So what is the syntax to create an object? So object obj equals to new add. Okay, I will tell you the syntax. It's simple. Okay, the class name itself, whatever the class name, we have to use as it is and give any variable. Okay, any variable I'm giving as a OL here. Okay, overload is equal to keyword as a new, again the same class name and the brackets. So here we have created the object of the class which we have created, right? The class name is overload. I have created an object for the same class, giving the reference variable as a OL. Okay, now I want to call these methods. I want to call these methods. So I will use that reference variable OL dot, I can get the methods. Okay, now see, the first method I am getting as a add only. Okay, which I have created in terms of signature as a two variables, int a int b. It is present in the overload class. Okay, it is giving the detailed description also. इस पे आपको क्लिक करना है. Then definitely it will accept the argument in terms of integer. So integer पता है हमको, single digit or we can say without decimal. So 10 and 20. So here I am defining the value of a as a 10, b as a 20. Okay, I want to call the second method or the method which we have created in line number 9. So again same variable, I need to call the second method with three arguments.
So I will give integer as a 10. Here it will be 20, and here it will be the 30. Okay. So if I will run this code, what will be the output? So the first method will display the output as 30 and the second method will display the output as 50. Sorry, 60. 60. Okay. Yeah. So I will try to run this code. We can see from the first method or the method which we have created in line number 5, it will give the output as 30 because of the addition of just two variables. And in second method, from which starting line number 9, it will give the addition of three variables as per the instruction or as per the what method syntax. Okay. Any doubt in this? This is the overloading. Okay. Yes. Now just understand the simplicity of this. Why we are using the overloading exactly? What is the meaning? See, in actual, if we have some same methods, हमारे पास मेथड सेम है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग वेरिएशन से हो सकते हैं. इन फॉर एग्जांपल, इट कैन एक्सेप्ट डिफरेंट पैरामीटर. मेरे आपके पास कोई मेथड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव लॉग इन मेथड and which is accepting the input parameter in terms of any variables. अगर वो वेरिएबल आपको इंक्रीज डिक्रीज करने हैं, है ना, बिकॉज इट शुड नॉट बी सेम. यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे है 3, राइट. आपको अगर वैरी करना है और उस मेथड को रन करना है, दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट. देखो यहाँ पे प्रोसेस इज सेम, द मेथड इज सेम, राइट. दैट मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड? To perform some action. वेरी गुड. सो माई एक्शन इज सेम, मुझे एक्शन सेम करना है, परफॉर्म, बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स. उसमें मैं आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट देने जा रहा हूँ. ओके, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस ओवरलोड. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. ओके, दिस इज द मेथड ओवरलोडिंग. दिस इज द मेथड ओवरलोडिंग. ओके. ओके. Now the next concept we have to see is the overriding. For that again I will go and I will create a new class. Okay. Sir, Yeah, बोलिए. compile time क्यों बोलते हैं? Okay, I will give that. Give me a minute. देखिए, overload. इसको मैं compile time polymorphism क्यों बोलता हूँ? Okay. देखिए, compile time मतलब जब as a user आप कोड लिख रहे हो, you are compiling the code, right? And from line number 5 also you are compiling the code, from line number 9 also you are compiling the code. अब यहाँ पे क्या होता है, यूजर ने यहाँ पे ऑलरेडी कंपाइल करते समय मेथड में आर्ग्यूमेंट डिफरेंट दिए हैं. मेथड में आर्ग्यूमेंट डिफरेंट दिए हैं. मान लीजिए अगर मैं इंट ए और इंट बी यहाँ पर भी दो ही आर्ग्यूमेंट देता, तो मुझे क्या एरर आना चाहिए था? एनी गेस? I'm getting error, right? देखिए सेम है यहाँ पर. What type of error I'm getting? Same signature. Same method है ना हमारे पास. देखिए it will show you like duplicate method, है ना. डुप्लीकेट, ये भी मेथड सेम है, ये भी मेथड सेम है, तो वो एरर आ रहा है. सो हमने क्या किया, कंपाइल टाइम करते समय ही उसको क्या किया, सिग्नेचर डिफरेंट कर दिया उसको, while compiling only. और ये है ओवरलोड, मतलब सेम मेथड एंड डिफरेंट सिग्नेचर, तो इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. देखिए नाम सेम है. पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या था, नेम शुड बी सेम बट इट फॉर्म शुड बी डिफरेंट. नेम इज सेम बट इट फॉर्म डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ और यहाँ पे 3, एंड दैट टू आई एम गिविंग. और ये प्रोसेस कब हो रही है, सिंपल, जब आप कंपाइल कर रहे हो. इसमें जेवीएम का कोई भी हाथ नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन जब हो रहा है उसमें उसका कुछ हाथ नहीं है. आपने ही उसको कंपाइल करते समय डिफरेंट पैरामीटर दे दिए. करेक्ट? गॉट इट? Okay, sir. अब जो आएगा नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट है कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम एग्जीक्यूशन. और
जब एग्जीक्यूशन के टाइम उसका ये होगा पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड एज ओवरराइड। अब वो कंसेप्ट क्या है वो भी हम देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको मैंने कंपाइल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहा। ओके, बट यहाँ पे सिंपल है इसका रीजन। कंपाइल टाइम मतलब वाइल राइटिंग द कोड इटसेल्फ यूजर इज गिविंग डिफरेंट सिग्नेचर, है ना, यूजर इज गिविंग डिफरेंट सिग्नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब जब मैं ये बताता हूँ ओवरराइड, रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा आपको। डन? Yes, sir. Okay, thank you. So we are going to see the concept of override. Okay. Now in override, the concept is what? Your method name and signature both must be same. आपका क्या होना चाहिए? मेथड का नाम भी और उसकी सिग्नेचर भी, ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो आई विल क्रिएट वन मेथड, public void, we can say add. Okay, and it is accepting the value int a, int b, okay, as a argument. Okay, now here I am typing it as a a plus, sorry, a plus b. Okay, and also one more sentence. For example, old car. Okay, I have created one method. I have created one method in which I have given the two arguments, integer a, integer b, और सिस्टम मेथड की बॉडी में मैंने डिफाइन किया है दो प्रिंट स्टेटमेंट्स। ओके, दो प्रिंट स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ this is what my complete method. This is what my complete method. Okay, now as per the overloading, the concept is the method name as well as its signature should be same. So I am creating second method, same method. Method is add, accepting the two arguments as int a, int b, int a, int b. I'm getting an error. What is the error? Duplicate method. Duplicate methods, right? In the same class we are giving the same method, that too with same signature. Okay, method same होना है तो overload में भी same था, method name was same, but because of this signature is different, it is not giving that error that method is duplicate. But here we are getting that error that method is duplicate. Okay, so keep in mind the concept of overriding cannot be done in one class. Okay, overriding ये concept आपको एक क्लास में देखने को नहीं मिलेगा, it should be seen in the two different classes. आपको क्या चाहिए? दो different class चाहिए। Okay, okay, so Okay, sir. this is the one class override. Now I required another class, so what I will do? I will go here, okay, and I will create one class, Java class with simple override 2. Override 2 नाम का मैंने क्लास बना लिया। Okay, click. You can see I have two classes, override 1, this is override 1, this is override 2. Now I'm in override 2. Here I will give the same method है जो मैंने override 1 में बनाया था। This is your override 1, this is your override 2. आपको error आ रहा है because both are in different classes. Both are in different classes. Now I want to use the methods, okay, in another classes. So this is your override 2. This is your override 2. Now I want to use the method from the previous class, that is override 1. So what I should do here? How can I get access the methods from the any other classes? So we should use inheritance. We can extend the override for class over here. Very good. We have to use the keyword extends. Okay. Which class we want to extend? That is Override 1. override 1. Right? See the class which we have already created, override 1.
Now it can use that methods. Okay, it can use that methods. Okay, यहाँ पे है. Okay, now I have created same methods, same signature, and that too in different classes. That too in different classes. Okay. Now for the execution, what I need? Main method. Main method, right? Simple. String args array. This your main method body. Okay. Now I want to use the method, so I need to create an object. So object of which class? Override 1 or override 2? Override 2. Override 2. Okay, so I will create an object of override 2. Okay, or simply or is equal to new. Okay, now I created an object of this class override 2. Okay, now I will call this method with the object or dot. I'm getting this method, right? You can see. Yes, sir. Okay, now if you will observe, if I will give here two integer. Okay, now okay, for example, in this body I will change this a instead of a minus b, and instead of old I will change it to get a new car, to get execution changes. Okay, देखिए अब override 1 में a मेथड के अंदर मैंने a plus b लिखा है and along with old car as a message, and in override 2 I have given as a minus b and with new car. Now if I will give the integer as 10, first integer 10, sorry 10, and second integer 20. So what will be the output here? What will be the So output? minus 10 new car. Minus 10. Okay, minus 10 new car. Yes, sir. Okay, again any guesses? Because I have already extended the previous class as well, right? Override 1, and override 1 also have the same method. Why should I not get a plus b old car and also this a minus b new car? Sir, we have not created the object for the override 1 class. Okay, but in extents or in inheritance, the concept is we are not creating the object of parent class, right? Yes. अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो उसमें मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, और आई हैव मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास. एनीबॉडी नोज? फॉर SLI or MLI, we have created an object of which class? Child class or parent class? Guys, you are doing practice or not? Child class. Child class, if you remember, we have created object of child class. That is the inheritance concept, right? हमने वही तो देखा था कि मुझे inheritance क्यों चाहिए. I want to use the methods or anything from the previous classes. तो उसको मैंने extend कर लिया. Then there is no need to create object of that class. From child class object also we can refer the methods from the parent also. वही कंसेप्ट है यहाँ पे. पर भाई यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास जो है ओवरराइड 2 उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. आई एम ट्राइंग टू कॉल द मेथड्स. सो हियर व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन? आई एम गेटिंग ओनली दिस.
Now what is the reason here? Any guesses? क्यों हो सकता है ऐसा? तो भी मैंने एक्सटेंड किया, दो आई हैव एक्सटेंडेड दी parent class. Okay, now listen the concept carefully. Okay, मैंने ओवरलोड को कहा था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें हम यूजर ही सिग्नेचर को डिफरेंट कर रहे थे, बट ओवरराइड में वो कंसेप्ट है ही नहीं. यहाँ पे मेथड भी सेम है और सिग्नेचर भी सेम है, बट दे एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्लासेस. That is the first rule, because same method और same signature के साथ हम उस क्लास में क्रिएट नहीं कर पा रहे थे. ओके, अब यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट जब दिया, ओके, बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, इट इज बाय डिफॉल्ट टेकिंग दी मेथड फ्रॉम दी चाइल्ड. अब ओवरराइड का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो ओल्ड आपका मेथड था वो ओवर रिडन हो जाता है. इट्स गेट ओवर रिडन बाय दी न्यू मेथड. ओके, देखिए आपकी जो ये ओल्ड मेथड थी, इसको क्या करता है जेवीएम, अभी बैकएंड में होता है. ओके, द जीएमवीएम विल ओवरराइड दिस मेथड. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस मेथड इज कॉल्ड एज. नाउ अगर आपको न्यू कुछ नेम से समझना इस कंसेप्ट को, तो इस मेथड को हम कहते हैं ओवर रिडन मेथड. जो ओवर रिडन मतलब जो डिलीट हो चुकी है, डिलीट मतलब रिप्लेस हो चुकी है, नॉट डिलीट एग्जैक्टली, इट इज रिप्लेस्ड. इट इज रिप्लेस्ड बाय दी न्यू, which is called as overriding method. अब इसको हम बोलेंगे overriding method. इस मेथड को मैं कहूंगा overridden, which is already replaced. Replaced by which method? By this. Okay, replaced by this method. अब JVM क्या करता है? It will go and deal with this from line number 12. देखो लाइन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है, दो इट्स अ सिंपल सिंटैक्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग. देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किस चीज का बनाया है? ऑफ दिस क्लास. ओके, टाइप इज ओवरराइड, रेफरेंस वेरिएबल इज आल्सो इंडिकेटिंग फॉर द ओवरराइड. चाइल्ड क्लासेस, दैट्स व्हाई आउटपुट इज दिस. वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास आल्सो. अगर मुझे पेरेंट क्लास की मेथड चाहिए तो आई विल यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. ओके, with some name, okay, ORN, okay, any name I am giving is equal to new keyword and again the class, that is parent class. Now this time if I am going to call the method, okay, now this time I am going to call the method with same value, no issue, just to check what exactly is happening. Okay, 20. Now if I will run this, what output I should get? So -10 new का 30 old का. That means from child class method as well as from the parent class method. Parent class method में मैंने addition दिया था 10 plus 20 and the old car was message. Okay, if we want to get that method, but JVM by default replace that method. देखो ये तो मैं कभी कर नहीं रहा था इसके पहले. I was not creating the object of the parent class, right? We were just creating the object of the child class and we are trying to access the method or anything from the parent class. But यहाँ पे क्या हो रहा है? I am creating the object of parent, तो definitely वो parent class के ही method को call करेगा. Okay? So that is the difference. अब ये तो मैं manually कर रहा हूँ, but backend में JVM ने क्या किया? उस method को, जो parent class की method है, उसको completely replace कर दिया. Is completely replaced by the new one. जो न्यू कहाँ पे होनी चाहिए? चाइल्ड क्लास में. अब ये सब हमने नहीं किया. ओके, इट हैपन ड्यूरिंग द रन टाइम. रन टाइम मतलब बैकएंड में जब जीवीएम में होता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस, तब होता है ये. दैट्स व्हाई दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. डाउट क्लियर हुआ अभी इस दोनों में? व्हाट इज ओवरलोड, ओवरराइड? Yes sir. Those who asked the question about overriding में overloading को हम compile time कैसे कहते हैं? डाउट क्लियर हो आपका? Yes, sir. Again, if you will mouse over here, it will show you, okay, overrides the method. Which method? देखिए, overrides polymorph क्या है? What is the polymorph here? In this sentence?
पैकेज, देखिए पैकेज का नाम दिया था ना मैंने, both both these classes exist in the same package. Okay, so here if you mouse over on this, it is showing overrides which method from the package polymorph, the class override one and the method name add. आपको यहाँ पे बता भी रहा है, देखिए the message. और ये सब JVM, it is like done by the JVM, it's not like by the user itself. Just what we are following the rule, the method name should be same with this signature. Signature भी उसका same चाहिए. Any doubt in this polymorphism? No, sir. Okay, how it is the runtime polymorphism, can you explain? It is the standard interview question. Okay, can you, आपको कोई directly ये नहीं पूछेगा overload and override, they will ask you can you explain the uh, wait a minute. Okay, yeah, can you hear me now? Yes, sir. So the question will be, can you explain the compile time and runtime polymorphism? So indirectly they are asking you about the overloading and the overriding concept. Okay, or simple they can ask method overriding, method overloading, बताइए क्या होता है. So you can give that example also, simple example. Okay, so this is the concept of polymorphism which we have covered. Okay, one of the concept from the OOPS. Next we are going to see the encapsulation. Okay, we are going to see the next concept as a encapsulation. Anybody knows what is encapsulation? Okay, we will discuss. Okay, what is encapsulation? It is also called as a data binding. Okay, data binding. Now in general, what is the meaning of binding? In general, bind कर रहे हो मतलब आप क्या करते हो? combine, Join, combining, integrating, attaching, multiple meanings. Okay, so here in data binding what we are doing is simple. देखिए simple definition समझ लीजिए या concept समझ लीजिए. Here we are combining or integrating more than two different functionalities, okay, or different features. Here I am adding or combining more than two different functionalities or feature. Okay, we are adding two different functionalities or features. है ना. इनकैप्सुलेशन में क्या करता हूँ, दो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को और फीचर्स को क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ. बहुत सिंपल रीजन है. अब इसका एग्जांपल तो मैं बताता हूँ आपको इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, बट इन कोडिंग्स वी डोंट नीड टू गेट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन द इनकैप्सुलेशन फ्रॉम डे वन. अब वो बताता हूँ आप कैसे. सिंपल एग्जांपल है आपका यहाँ पे क्लास. एनकैप्सुलेशन एग्जांपल क्या पूछेंगे आपको, तो यू कैन जस्ट सिंपली से द क्लास. हाउ, प्रूव इट. देखिए व्हाट इज द क्लास एग्जैक्टली. फ्रॉम डे वन वी आर सीइंग व्हाट इज क्लास, मेथड, ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द क्लास, व्हाई वी आर यूजिंग द क्लास, to write a code, टू राइट ए कोड. जो भी हमारा कोड है वो हम क्लास में लिखते हैं, राइट. नाउ दैट इज द सिंपल
And what is the class? It is a combination of Data variables and data data methods. variables and data Data methods. methods. Okay, data methods, right? Okay. Now, data variables. Data variables मतलब हम क्या कर रहे थे? For example, we are specifying the data type int a, giving any variable and giving its value. Okay? तो ये क्यों यूज होता है? ये क्यों करते हैं हम यूज? To initialize variable. Yeah, to define or to initialize your data. है ना? डेटा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, depending upon data type. So by using the data variable, what we are going to do by to define the data, okay, and its value, right? डेटा टाइप और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया हमने, इनिशियलाइजेशन एंड सॉरी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. ओके ओके सेम. व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड? मेथड का यूज क्या होता है? To perform some action. टू परफॉर्म some action. Okay, so how we are implementing the method exactly? For example, any method name m1, okay, and we are giving some statement, right? We are giving some statement. So this statement will be used to perform a particular action which user is going to specify. देखिए यहाँ पे two different functionalities हो गए. dv is going to use to define the data along with its value. ये एक अलग functionality हो गई which we are taking by use of dv. And we having the dm data methods which are used to perform some operations or some actions. जैसे कि m1 मेथड है, उसकी कुछ बॉडी है और उसमें हमने स्टेटमेंट दी है. We are going to combining these two in a one entity, and that entity is nothing but your class. Yes or no? Yes, sir. Okay, we are seeing this concept, okay, polymorphism, inheritance. This comes under which concept? Oops. Oops. What is the full form of oops? Object oriented programming system. Okay, तो inheritance में मैंने object देखा था. Have you created any object for inheritance concept? Yes or no, guys? हमने कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में? Yes. Yes, definitely we have created an object, right, in the child class. In inheritance we have seen single level or multiple level. In both, in multi level, in both we have created the object. Yes or no? Yes, sir. So oops यहाँ पे मान लेता हूँ मैं oops हो रहा है. Okay, then we have seen which concept? Polymorphism. In that have we created object? Yes. Yes. So it also comes under oops. Okay, now we are seeing encapsulation. अब मैं कह रहा हूँ कि encapsulation मैं बताऊंगा नहीं आपको directly example because we have seen the classes. Have we created classes along with dv or dm and have we used the object? Yes or no? हमने अभी कैसे किया है कभी? Yes. Yes. Definitely we have seen this, right? जब हमने simple starting में देखा था, जब कुछ भी oops नहीं देखा था हमने, simple plain class देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? Static and non-static method देखा था. And for the non-static method we are calling it by creating the object. याद है सभी को? Yes, sir. है ना? देखिए static के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. That we are directly calling it by Class how? name. Class name, right? स्टैटिक के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली उसको क्लास नेम से कॉल कर रहे थे. बट इफ द मेथड इज नॉन स्टैटिक, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट टू कॉल द रिस्पेक्टिव मेथड. सो दैट मीन्स एनकैप्सुलेशन आपने पहले ही पढ़ लिया है. ऑल दिस कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन. सो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मैं इसका प्रोग्राम नहीं दिखाऊंगा. एंड देयर इज नो नीड ऑल्सो. जितने भी हम अभी तक जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और वो क्लास है, अगर उसमें कुछ मेथड है, उसमें कुछ वेरिएबल्स है, सो इट बिकम्स द एनकैप्सुलेशन. ओके, डन? एनी डाउट इन दिस? Sir, can you please repeat what disconnect हो गया?
Sorry, I am not getting your voice clearly. The last part, sir. Last part. Okay. See, I was saying the encapsulation is what? Combining the two different features or functionality into one entity. Simple. Into one entity. Okay. नाउ एग्जाम्पल इज क्लास. मान लीजिए क्लास ये एक एंटिटी है और इसमें मैंने टू फीचर्स या फंक्शनलिटीज कंबाइन की है. कौन से? द क्लास डेफिनेशन की क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में? डेटा वेरिएबल एंड दी डेटा मेथड्स. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा वेरिएबल एंड डेटा मेथड्स. नाउ अगर मैं डीवी की बात करूं, डेटा वेरिएबल, तो डेटा वेरिएबल में हम क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं. ओके. और इसको सिंपल वर्ड में समझ जाए तो टू डिफाइन द डेटा एंड इट्स वैल्यू. डीवी का फंक्शनलिटी क्या है? हम कोई भी डेटा डिफाइन भी करते हैं और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं. ओके. देन नेक्स्ट एडिशन इज व्हाट? द डीएम, डेटा मेथड्स. डेटा मेथड मींस टू परफॉर्म अ एक्शन, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन. सो एक्शन मतलब कहाँ से होती है? वो मेथड से होती है. सो दिस इज अ मेथड M1 in which I am going to give some statement. It may be some print statement or whatever it may be. That action will happen in this body, method body. अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ. अब यहाँ पे तो मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया नहीं आपको. बिलो आई हैव नॉट क्रिएटेड इन ऑब्जेक्ट, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज when we have seen the simple programming, okay, or simple class to understand the static and non static method, तब देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उस ऑब्जेक्ट से नॉन स्टैटिक मेथड को मैंने कॉल किया था. राइट. तो हो गया आपका ये क्लास इज द एंटिटी और एग्जांपल विच शोज द एनकैप्सुलेशन, जहां पे मैं डेटा वेरिएबल और डेटा मेथड को कंबाइन कर रहा हूं और उनको यूज भी कर रहा हूं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट. ओके. डन. Yes, sir. Okay. Okay. So this is what the concept of your encapsulation. I'm not going to write the program for this. Okay. Keep in mind because we have already seen this. ये हमने पहले ही देख ली है. ओके. सो नो नीड. जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में पहले हमने कंसेप्ट देखा, फिर उसका प्रोग्राम देखा. राइट. हियर इन एनकैप्सुलेशन वी हैव सीन द कंसेप्ट और उसका प्रोग्राम हमने पहले ही कर लिया. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस कंसेप्ट. ओके. ऑन द इक्लिप्स. So that is the encapsulation. Next, very important concept, abstract. Very important concept. समझ लीजिए इसको. ओके. Abstract. जनरली इसका मीनिंग होता है डेटा हाइडिंग. डेटा हाइडिंग. जैसे इसका मीनिंग क्या था? डेटा बाइंडिंग था एनकैप्सुलेशन का. इस कंसेप्ट का मीनिंग है डेटा हाइडिंग. मुझे डेटा करना है हाइड. वी वांट टू हाइड द डेटा. ओके. सो टू अंडरस्टैंड दिस एब्स्ट्रैक्ट वी शुड फॉलो सम रूल्स. ओके. ओके. प्लीज राइट इट if you have any notebook. Okay. The first rule is what? We have to create a class by using the abstract keyword. देखिए अभी तक मैंने जो भी क्लास बनाए हैं, दिस क्लास. ओके. इस क्लास के पहले कभी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं था. दैट वाज सिंपली द पब्लिक. ओके. बट अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट इस कंसेप्ट के साथ काम कर रहा हूं तो मुझे क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट ये कीवर्ड यूज करना है. इट्स अगेन कीवर्ड. जैसे पब्लिक एक कीवर्ड है जावा में, तो एब्स्ट्रैक्ट भी क्या है? कीवर्ड है. ओके. सो सिंपल द रूल इज टू यूज द एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट वी नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. ओके. बिफोर द क्लास नेम. ओके. तभी उस क्लास को जाके मैं क्या कहूंगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहूंगा. देखिए अब तक मैं क्लास को कुछ टाइप नहीं बताया था मैंने कि ये इस टाइप का क्लास है, उस टाइप का क्लास है. बट इफ आई एम यूजिंग द कीवर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट बिफोर द क्लास, इट बिकम्स द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ओके. दिस इज देयर शुड बी नो एनी डाउट. ओके. नाउ अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर आपने क्यों कहा? इसका स्पेशल मीनिंग क्या बनता है? ओके. सो
the abstract class contain the abstract methods. Again the new concept coming into picture. Okay, abstract class क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज फर्स्ट तो क्लास के सामने एक कीवर्ड है abstract. ओके, ए स्मॉल ही होगा दोस्तों, यहाँ पे ये वर्ड में इसलिए कैपिटल आ रहा है. ओके, बिकॉज जावा इज अ केस सेंसिटिव, सो it should be the small letter only. A will start, for example, I will just going to type here. Okay, you can see. Okay, like this. It's a keyword. Now we have to use first rule number one. We have to use the abstract keyword before the class. Okay. Next rule we have to keep in mind is inside the abstract class we should have the abstract method. Abstract method क्या होता है? Okay, abstract method होता क्या है? How it is different? Same. Abstract नाम का कीवर्ड मुझे मेथड के पहले भी चाहिए. Abstract any method name, abstract void add. Okay, abstract void add is any method, and here the concept is what? I'm just completing the sentence. अब नॉर्मल मेथड से यहाँ पे डिफरेंस क्या है समझ लीजिए. इन नॉर्मल मेथड आई वॉज गिविंग द बॉडी ऑफ मेथड, राइट? आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या कर रहा था? कुछ स्टेटमेंट दे रहा था. ओके, एंड after that the method was completed, right? In the method body I was specifying some execution और statement कुछ दे रहा था मैं, but यहाँ पे क्या है? We are not giving it, we are just specifying the method, that's it. Syntax समझ लीजिए. okay, I'm just specifying the method, that's it, not giving any body. but method के नाम के पहले भी मैं abstract keyword use कर रहा था. okay, सो दिस कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें मैंने बॉडी स्पेसिफाई नहीं की है. बॉडी स्पेसिफाई नहीं की है मतलब सिंपल उसका मीनिंग होता है कि वो मेथड एग्जैक्टली क्या काम करने वाली है. व्हाट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. सो अब ये स्पेसिफाई कहाँ पे होगा? तो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट यही है कि इन नेक्स्ट क्लास और इन अदर क्लास वी आर गोइंग to define the body or implementations of that method. देखिए मैं कह रहा हूँ कि मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. अब ये ऐड कर रही है, बट एग्जैक्टली ये मेथड क्या परफॉर्म कर रही है वो मैं किसी और क्लास में स्पेसिफाई करूंगा, है ना? उसको मैं किसी और क्लास में स्पेसिफाई करूंगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में मैंने void add ये मेथड बना दी है. ओके, एंड नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव सम स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, एनी स्टेटमेंट, एंड आई एम गिविंग द बॉडी. अब ये किसी और क्लास में हो रहा है. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्क्रीट मेथड. कॉन्क्रीट मतलब इसमें कुछ तो है ना? सम स्टेटमेंट और सम कोड है. अब इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है मैंने. ओके, सिंपल. दिस इज योर सेकंड रूल. नाउ व्हाट इज द थर्ड रूल फॉर दिस to use the abstraction concept is keep it in mind that we cannot create any object for the abstract class. मतलब मैं अगर क्लास के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूं. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना? मैं कोई भी क्लास नहीं बोल रहा हूं. अगर क्लास के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है तो वो क्लास बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूं. सो टू गेट एक्सेस फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करना पड़ेगा फिर मुझे? मान लीजिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसमें एक मेथड है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है. अब उसको मुझे किसी और क्लास में यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूं. किसका? इस क्लास का. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? What we should do, guys? We have seen this.
we should use the concept of inheritance. मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा कोई न्यू क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं पैरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं बना पा रहा था। सो मैं नेक्स्ट क्लास मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इन मेथड को क्या करूंगा? कंप्लीट करूंगा ना। वी आर गोइंग टू डिफाइन द बॉडी और वी आर गोइंग टू मेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड एंड देन आई कैन यूज दिस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. एनी डाउट माय डियर? No, sir. नो? ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगेन आई विल शो यू विद एग्जांपल ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्शन डेटा हेडिंग कैसे होता है। ओके, बट बिफोर दैट ये जो 3 रूल है ये समझ लीजिए। ओके, हाउ दिस 3 रूल्स आर, दिस इज दी 3 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं कोडिंग करूंगा इक्लिप्स में तो ये 3 चीजों को हमको इम्प्लीमेंट करना है वन बाय वन। So it's very easy to understand exactly what is data hiding or the concept of abstraction or abstract. Okay, so today we have seen the concept of what the polymorphism, in that we have seen the method overloading, method overriding, और इसके दो नाम है जो है अलग, that is compile time polymorphism and the run time polymorphism और execution time polymorphism। ये दो एक्सप्लेन करना है आपको। and also the encapsulation, we have just seen the concept but we have already seen the programming for this। okay, how we are going to combine the two different functionalities into the one single entity। okay, that is the class। okay, and then we have just started with the concept of abstraction or data hiding। in that just 3 rules are important to understand the concept। okay, so any doubt here up to this? No, sir. Yes, no? No, sir. Okay, No, sir. yeah, so again my request is keep practicing। okay, जो भी आपके पहले के कंसेप्ट हुए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगेन यू कैन गेट एन डाउट कि अभी तक हमने जो कंसेप्ट देखे हैं यू शुड बी नॉट बी एबल टू रिलेट इट विद द एक्चुअल यूज। अभी भी आपको लग रहा होगा कि इन सभी का एक्चुअल यूज कहाँ पे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होना है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज इन फॉर दिस सेलेनियम। ओके, बट अगर मैं डायरेक्टली सेलेनियम में कंसेप्ट दिखाऊंगा तो इट विल क्रिएट मोर कन्फ्यूजन, बिकॉज आपको बैकग्राउंड प्रोसेस कुछ भी नहीं पता होगी, है ना, कहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है, क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है ऊप्स के, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कंसेप्ट वेरी इजी मैनर, है ना। अब इसको हम वन बाय वन सेलेनियम में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, बट तब होगा कि आपको ये बेसिक की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप, है ना। सो बेटर जो भी अभी हो रहा है बेसिक जावा के लिए, ओके, इट्स नॉट अगेन द पार्ट ऑफ एडवांस जावा, इट्स वेरी बेसिक। आपको कोई भी इंटरव्यू में जाओगे तो बेसिक जावा आता है ये अगर बोलोगे तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, लिटरली आप भले ही ऑटोमेशन के लिए इंटरव्यू दीजिए, मैनुअल के लिए दीजिए, इफ़ यू आर सेइंग यू आर गुड इन बेसिक्स ऑफ जावा तो आपको जावा के भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। okay, what is inheritance, can you explain polymorphism, can you explain encapsulation, data hiding, like this। okay, so you should be able to give the coding as well। आपको बस कंसेप्ट पता कि नहीं छोड़ना है, they can understand by coding also। आपको इसका कोडिंग पता है क्या वो भी पूछ सकते हैं आपको। okay, so keep practicing, tomorrow we will have the session on the same time। okay, so we'll stop here, thank you।